सो गाइस ये है हमारा राइस एंड ये है रियली वेरी नाइस। और रात को ये प्लेस बहुत ही अच्छी दिखती है, बहुत ही लाइटेड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है हमारा डे 2 इन गोवा। ये है हमारा होटल का आउटसाइड का व्यू। वी आर हेडिंग फॉर पंजिम टुडे। So Panjim, as you all know, is the capital of Goa. यहाँ पे you'll find a lot of Portuguese style architecture, a lot of old churches, a lot of cool cafes. अभी हल्की धूप है बट हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी ऑन द रोड्स इट फील्स ग्रेट ऑन टू व्हीलर राइड। गाइस, गोवा में आके यू डेफिनेटली शुड ट्राई स्कूटी राइड। सो हम पंजिम पहुंच गए हैं एंड इट्स टाइम फॉर सम ब्रेकफास्ट। सो हम हैं कैफ़े टाटोज में विच इज़ इन द हार्ट ऑफ पंजिम एंड हमने लिया है गोवन बन अलॉन्ग विद छोले एंड द कॉम्बिनेशन टेस्ट डिलीशियस। वेल, अब ब्रेकफास्ट के बाद हमें ज़रूरत थी थोड़ी सी चाय की। सो हम यहाँ पर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में आ गए हैं विद द अमेजिंग व्यू ऑफ मांडोवी रिवर। हम पहुंच गए फाउंटेनास पे। सो इस प्लेस को लैटिन क्वार्टर्स बोलते हैं। दिस प्लेस वाज इनिशियली यूज्ड फॉर कोकोनट प्लांटेशन इन 18th century until the capital city of Goa was moved from Old Goa to Panjim, and इस प्लेस को यूज़ किया गया for as a residential colony for the administrative officers at that time. We are in the heart of Panjim, which is Our Lady of Immaculate Conception Church. ये बहुत ही पुरानी चर्च है जो उस टाइम के आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया था एंड दिस इज़ रियली ऑसम। आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो फ्रेंड्स, दैट दी मंडोवी रिवर आप देख रहे हो। इस पे बहुत सारे ऐसे क्रूज़ अवेलेबल होते हैं। आप आराम से यहाँ पे पार्टी कर सकते हो। यू कैन एन्जॉय। सो यहाँ पे बहुत सारे बीच पे मतलब रिवर पे बहुत सारे क्रूज़ कसिनोज वगैरह है। सो इट्स रियली वेरी नाइस। और रात को ये प्लेस बहुत ही अच्छी दिखती है, बहुत ही लाइटेड होता है। अभी हम लंच पे जाएंगे एंड हमें ट्राई करनी है ऑथेंटिक गोवन थाली। सो इसके लिए हमने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के रखा है। सो ये रेस्टोरेंट बिल्कुल हाई कोर्ट के सामने है। सो चलिए चलते हैं। We are at Workshop Restaurant and let's enjoy some delicious Goan food.
dining area of workshop. Quite a good area, like अच्छा एम्बियंस है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है. सो गाइस, ये है हमारा राइस एंड ये है गोवान करी. ये बेसिकली कोकोनट मिल्क से बनता है. एंड देन वी हैव हियर क्रैब एंड this is again a seafood. This is basically some kind of shellfish. एंड ये एक भाजी है. एंड दिस इज़ अगेन एक ड्राई फिश का फ्राई है. दिस इज़ गुलाब जामुन एंड दिस इज़ soul curry. This is basically kokum sharbat, a kokum drink you can say. And this is our kingfish, that is surmai rava fry. और साथ में हमने ये लिया है prawn rava fry. After relishing this Goan thali, we are heading for Aguada Fort. Aguada Fort is an A-side protected historical heritage. This was originally built for defense reasons. This fort is located at an amazing location where Mandovi River meets Arabian Sea. Aguada means fresh water in Portuguese. This fort was used to hold massive amount of water so that the ships on the way can fill up their stock of potable water. After viewing this wonderful piece of architecture, हम जा रहे हैं Calangute beach to enjoy sunset. हम कैलंगॉट बीच में हैं. आप देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पर. And the lovely sunset. After this wonderful day of excitement and travel, we are going to our room. This was our day 2 in Goa. Hope you liked this video. Please do subscribe to our channel. Soon we'll come up with the next part of this Goa series. Till then, take care and bye-bye. सर आगे 10 को कौन से माना ना तो अभी कुछ स्पीड क्लोज किया जा रहा है तो 6 का